our expert for the webinar, has joined us. Welcome you, sir. As far as today's webinar is concerned, we are engaging on a topic which I believe is of a pivotal importance, not only in the region, but in fact in the entire globe. As far as this webinar is concerned, we are also thankful to our Honorable Principal, Sir Professor Muhammad Amin Malik, who is always at the forefront of organizing such kind of conversations and engagements. May I also inform you that our principal, sir, is himself a scholar par excellence and has been a columnist around for 2 decades. He's also the author of a book and has himself published many research papers in many reputed journals of the country and abroad. Thank you, Principal, sir, for giving us this opportunity for engaging on a very vital issue as far as the world and the region is concerned. As far as the webinar is concerned, I'll start a very brief introduction, then we'll go to the expert also. Albert Einstein once said that no problem can be solved in the same consciousness that created it. We must learn to see the world anew. The creative solution of any issue or a problem requires clarifying doubts. It also requires dialogue, acknowledgement, conversation, affirmations, and accepting other perspectives, and then acting accordingly in that direction. UNESCO's preamble says that since war begins in the minds of men, it is in the minds of men those defenses of peace must be created. Teachers have a very crucial role as far as the foundation of peace is concerned. But unfortunately, this is the area which is not often recognized. Consequently, the enormous potential, the resources and the opportunities for peace building through education go untapped. They remain untapped. So if the culture of peace in any society gets eroded, it denotes a failure on part of the education. Today, we have invited a very important person who is working on the heart of this subject. He's Professor Amman Madan. So, as far as Aman sir is concerned, he studied Anthropology at Punjab University, Chandigarh, Sociology at the Jawaharlal Nehru University. He has his teaching experience and he has worked in IIT Kanpur, Tata Institute of Social Sciences, Jawaharlal Nehru University, and he is currently at prestigious Azim Premji University as Professor of Sociology and Social Anthropology. We are glad and pleased to welcome you, sir. Before Professor Aman sir will help us understand the concept of peace and justice, I would like to invite Professor Muhammad Amin Malik, the Honorable Principal of the College, for formal welcome address. Over to Principal, sir. Thank you, Dr. Manzoor. Good morning to all of you, esteemed guests, participants, academicians, principals, faculty of different colleges, universities, and research scholars. On behalf of HKM Government Degree College, Bandipora, it is my pleasure and privilege to extend a very warm welcome to all of you to this webinar. And this webinar is on education for peace and justice. It is a very, very important topic, a relevant topic in today's lives. And this lecture is being organized by the Department of Education of this college. And
I appreciate Professor Manzoor for organizing this event. Ladies and gentlemen, as far as the education as a whole concept is concerned, it's not about learning new things, appearing in exams, obtaining degrees, and then absorbing oneself in jobs. It's not only that. It is actually the development of human being. People learn to adapt to life with other people of different backgrounds on earth so that there is a peaceful coexistence. Now, if we look around today, humanity is facing enormous problems and challenges. Warming, environmental pollution, energy crisis, and then, of course, the overpopulation and unemployment problems, and which is threatening our survival on earth. Now, lower down in the ladder, we face the discrimination on the basis of race, language, caste, color, region, urban-rural divide. And there are so many issues, problems that the humanity is facing in every nook and corner of the earth. So if a person, he hates another person, the second person, he hates the first person back, the ultimate result is hatred and intolerance. And then the religion has been exploited everywhere, and it has become a tool, and it's also creating problems. Now, if we see that all the religions of the world, they stand for peace, love, and harmony. But we are facing problems because of exploitation of religion. Now, the solution to all these problems comes through the quality education. Our education sector, over the years, it has not been delivering to such an extent to solve these problems. The quality education is almost a dream. And this quality education is so important for all of us. Only quality education can give birth to the peace and human progress, prosperity, achievements in science and technology, art, literature can only be accomplished if there is peace on earth. As I said, that it can only be achieved through quality education. Now, being a science student, I have seen that science also plays a major role in building
a quality education through critical thinking, logic, reason, and other things. The science education has suffered enormously over the years in our institutions. The students are of the view that they want to get absorbed or become engineer, doctor, or researcher, but we have lost the vision that what science should play a part in building a scientific temperament in the society, so that there is logic, reason, critical thinking in our education system, so that the students and the whole society, they behave in a very reasonable way. I wrote, as Professor Manzoor said, that I have written a book, and this book I wrote this year under the title Science for a Sustainable Future. Science for a Sustainable Future. And in this book, I have emphasized that we should concentrate on building a science culture in our educational institutions, so that its influence goes to the society. They become logical, reasoning is developed everywhere. And we become peaceful, we become peace loving, we realize the importance of everything, religion, we realize the issues of all the problems we are facing in today's world. Ladies and gentlemen, we have with us Professor Amin, Professor Amman Madan. He's a professor of sociology and social anthropology. He has already been introduced by Professor Manzoor, and he has a lot of experience over these issues, how we can build peace through education in our institutions, which is so important for all of us, for our peaceful coexistence. And we will have his lecture here, and I sincerely extend a warm and cordial welcome to you, sir. Despite your tight schedule, you have been kind enough to spare time for this lecture. And I sincerely believe that the engagements and deliberations of participants attending this lecture will prove fruitful and productive. And indeed, it is my pleasure to have all of you with us this morning. I thank you all. Now I invite Professor Amman Madan to take the floor and address the participants. Thank you, sir. Thank you so much, Professor Amin Malik. It was so interesting to hear your views. And thank you also, Professor Manzoor Parey, for giving me this opportunity to be here with all of you. And my greetings from Bangalore to everyone here who is online. And I understand it's very cold there. Here, I don't even need to wear a jacket. I can sit like this. I can't turn the fan on, but I can sit like this. You know? So I'm actually very envious. You're really enjoying a real winter.
Actually, sir, a snowfall did not take place this year as usual. Oh, it snows also at Bandipur. Oh, Baba. Bandipora, sir, I could not introduce you about Bandipora. It's a place in North Kashmir. Okay. And it is nearly 60 kilometers from Srinagar. This college is some 6 kilometers from district headquarters. And Bandipora is a very famous place. It is known for 3 A's, Alim, Adab, and Pani, Ab. Ab we call water. Yes, yes. Our college is located on a hilltop. We have this famous panoramic view of the Waller Lake. Waller Lake is the second largest freshwater lake in India. And we have a very pleasant atmosphere here in the college. Some 3,500 students are on roles in the college. Then we have IGNO and other universities. They are also, the students are studying in the college. It's a large college. Huh? It's quite a large college. And in the last year, in the month of September, sir, this college earned a distinction for in the first cycle of NAC visit. We were declared Grade B college. Oh, congratulations. Thank you, sir. Thank you, sir. You can start your presentation. Yeah. Thank you so much. Yeah, it's a privilege to be here, and to be talking with all of you. Let me turn on my slides, and then I'll start talking about this. Give me a second to turn on my slides. Yeah, and 1 second. 1 second. Oh, sorry, I lost that. 1 second. Huh? Hello, sir. You can share the presentation. You have already been assigned the rights of co-host. So kindly share your presentation. I think sir has lost connection probably. Parvasa. Maybe he'll join in a while, or you can call him. I'm sorry, when I was trying to share it, my Zoom crashed. Let me try sharing it once again. Yeah. Dr. Manzoor Parey, can you please give me permission to share? Yes, sir. Yes, sir. Please go ahead, sir. We are waiting. Right. Please go ahead. Take your time and share. Thank you. Okay. Sir, we have given the permission to share. Right. Yeah, now it's working. Can you see my screen now? Yes, sir. We are. Badhiya. Thank you so much. And well, I'll be talking about what it means to have an education for peace and justice. Now, the importance of this, Professor Malik has already touched upon. See, always any education system has to be sensitive to its times. We have to be thinking about what are the problems of our times, and we need to respond to those. For example, yes, it is true that our times rest upon the use of science and technology. If these are so important in our times, then our education system should be talking about science and technology. At the same time, as Professor Malik also mentioned, that we are also in times of great strife. ये एक ऐसा वक्त है जब इतने तरह के struggles लोगों में हो रही हैं. So this is also an issue which the education system should take up. If our times have so much struggles, so much violence, so much hatred, this is a challenge of our times, and it's very important that the education system also respond to this. What would be an education
ऐसी किस तरह की तालीम हो सकती है जो कि पीस और जस्टिस को बढ़ाए? मैं ये कहने की कोशिश करूँ कि इसके 3 पिलर्स होंगे। पहला यही कि वी शुड लर्न टू लव पीपल, है ना, कि अगर हम ऐसा एजुकेशन बना रहे हैं या ऐसे एक कल्चर बना रहे हैं जिसमें हम लोगों को एक दूसरे से नफरत करना सिखाते हैं, तो ना पीस हो सकती है ना जस्टिस हो सकता है। वी मस्ट हैव अ कल्चर and we must have an education system which promotes the ability to love people. We must have the ability to resolve issues, to resolve debates, conflicts through dialogue. ये भी एक culture बनाना पड़ेगा. This is the second pillar. When we learn how to resolve differences, there will always be differences. That's not a problem. There will always be differences. Then we have to learn to deal with them through dialogue. See, differences is not a problem. Can we have human existence? क्या लोग ऐसे रह सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं कि जिनमें आपस में कोई differences ना हो? ये हो ही नहीं सकता. Differences तो रहेंगे, और कई बार differences होना बहुत अच्छा और बहुत ज़रूरी भी है. For example, अगर मान लीजिए मैं एक ऐसे community से हूँ जिसको कई सदियों से दबाया और कुचला गया है, जिसको बेसिक रिसोर्सेज भी नहीं दी जाती हैं, जैसे एजुकेशन जिसको डिनाई किया जा रहा है, जिसको रिस्पेक्ट डिनाई किया जा रहा है, जिसके पास ज़मीन नहीं है. तो ये तो अच्छा है कि ऐसी कम्युनिटी अपनी आवाज़ उठाए और कहे कि हमारे साथ इंसाफ हो. तो डिफरेंसेस होना तो अच्छा है कई जगहों पर, क्योंकि जब ऐसे डिफरेंसेस होंगे तो उस कम्युनिटी को इंसाफ भी मिलेगा, और इस तरह की बातों से, इस तरह के आवाज़ उठाने से दूसरी कम्युनिटीज़ का भी भला होगा. दूसरी कम्युनिटीज़ की भी सोच ज़्यादा अच्छी होगी, ज़्यादा साफ होगी, सभी के लिए फ़ायदा है. सो डिफरेंसेस अपने आप में प्रॉब्लम नहीं है. सवाल यह है कि क्या डिफरेंसेस को हम किस तरह से सुलझाते हैं, वो है मसला. एंड आई एम ट्राइंग टू से कि along with learning to love others, we must learn to deal with issues through dialogue and not through force. And I'll explain why not in a few minutes' time. That's my second major point. The third major thing, which I'm saying, I will say that education should promote, is we must also learn to talk about moral questions. We must learn to think about what is just, इंसाफ क्या है, सही गलत क्या है. बच्चों को, यंग पीपल को, नौजवानों को इसके बारे में सोचना सीखना ज़रूरी है, और इसके बारे में महसूस करना ज़रूरी है कि अगर हम वो इंसाफ के को समझना शुरू करें तो बहुत चीज़ें आसान हो जाती हैं. इंसाफ को समझना, इंसाफ के ऊपर सोचना, यही नहीं सिर्फ महसूस करना कि मैं सही हूँ कि बाकी सब गलत है. सोचें, इसके ऊपर सोचना कैसे सिखाया जा सकता है. These are, I will try to say that these are 3 major things which we need to do in the education system. And I will try to talk about how to do this, these 3 things. But first, I will also talk about why we need to do this. इसको क्यों करें? सबसे पहली बात इसी से शुरू करें कि जब भी हमारे पास डिफरेंसेस होते हैं तो क्या तरीके हो सकते हैं इनके साथ इनको सुलझाने के, है ना. आप कहेंगे, हो सकता है कि आपको लग रहा हो कि ये तो बहुत आइडियलिस्टिक बातें कर रहे हैं कि हर चीज़ को प्यार मोहब्बत से सुलझाना चाहिए, बातचीत से सुलझाना चाहिए, दुनिया में ऐसे कहाँ होता है. हो सकता है आप ये कहें, बट आई एम ट्राइंग टू आर्ग्यू दैट देयर आर वेरी गुड रीजंस टू से कि प्यार मोहब्बत को बढ़ाना सभी के फायदे में है. मैं क्यों ऐसे कह रहा हूँ, उसके लिए ये पहले देखें कि कन्फ्लिक्ट्स को सुलझाने के बेसिक तरीके क्या होते हैं. मान लीजिए एक कन्फ्लिक्ट है कि मैं एक स्टूडेंट हूँ, मैंने बहुत अच्छा एग्जाम पेपर लिखा, लेकिन जब रिजल्ट आया तो मैं फेल हूँ. तो मुझे लगा मैं तो बहुत अच्छा लिख कर आया हूँ, लेकिन मैं फेल कैसे हो गया. तो ये एक कन्फ्लिक्ट है. तो मैं इसको कैसे सुलझाऊं,
इसके सुलझाने के 4-5 तरीके हो सकते हैं, और भी हो सकते हैं. Let me give 1 or 2 examples. The first way of resolving this is what people who analyze this, people who theorize this, they call this contending or asserting or confronting. So I have a problem. I deal with it by saying कि मैं सही हूँ, आप गलत हो. There's no dialogue. मैं सही हूँ, आप गलत हो. This is a confrontational approach. So I can go to the teacher who was checking my paper and say, "Are you mad? How have you failed me? आपने कैसे कर दिया ये? आप तो बिल्कुल you're a useless person, and I'm going to go on strike. ये तो बिल्कुल बकवास कर दिया आपने." This is one approach. No? The approach of contending or asserting, confronting. Note in this, the basic approach is, I am right, and I want you to do what I'm telling you to do. You know? This is one way of dealing with conflicts. Another way of dealing with conflicts is to yield, is to say कि ठीक है, जो आप कह रहे हैं सही है, आपने फेल किया, सही किया, कोई दिक्कत नहीं. This is your right. This is the second way. A third way is to withdraw, is to say कि आपने मुझे फेल किया, मैं कॉलेज छोड़ के जा रहा हूँ, तो मुझे इसमें पढ़ना ही नहीं झगड़े में. ठीक है, मैं तो छोड़ के जा रहा हूँ. I'm withdrawing. A fourth way is to avoid. So the first is to contend and assert. The second is to yield. A third is to withdraw. A fourth is to avoid. कि मैंने कुछ देखा ही नहीं, मैंने कभी कुछ गलत देखा ही नहीं. I'm avoiding the whole problem. A fifth way, and which is the way that I will talk about, is can we solve the problem? Can we do a problem solving approach जिसमें हम लोग dialogue करें, साथ मिलकर थोड़ा सुलझाने की कोशिश करें. This is the fifth way, and this is what I will try to suggest is perhaps a better way. Not always. Sometimes it's good to contend. Sometimes it's good to confront. Sometimes it's good to yield. कौन इसमें पड़ेगा? Sometimes, actually in many situations, it's this last approach, this dialogue approach, which works best. So I go to my teacher. My teacher has failed me. I thought I did a very good paper. My teacher has failed me. So I go to my teacher and say, I'd like to discuss this. I'm not saying, are you mad? Are you crazy? I'm saying, I'd like to discuss this. And first thing which we do in a dialogue is we try to listen to people. Okay. Can you explain to me what were you expecting in this paper? आपके expectations क्या थे? हो सकता है मैं ही गलत हूँ, मुझे लग रहा है मैंने बहुत अच्छे से किया हुआ है, लेकिन हो सकता है मेरे expectations मैं समझा ही नहीं था. So can you explain to me your expectations? Or can you explain to me after I listen to the expectations, मुझे लगता नहीं मैं तो सही किया है, तो तब मैं कहूँ कि शायद जो आप कह रहे हैं, शायद मुझे तो लग रहा है कि मैंने यही लिखा है, आप इसको एक बार फिर से देखिएगा, शायद मुझे गलत लग रहा हो कि मैंने इसको यही लिखा है. So this is a dialogue approach. In many situations, this works actually much better than any other approach. Again, I'm not saying this is the only approach. There are many approaches, but this is the approach which works best in many situations. My submission is, in our country, in our world, हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल मिलेंगे फिल्मों में, दोस्तों से, मीडिया में, जो पहले अप्रोच को सिखाते हैं, हाउ टू कन्फ्रंट, और जरूरी भी होता है. बट हाउ टू हैव अ डायलॉग, इसके एग्जाम्पल्स हमारे पास कम मिलते हैं और इसको सिखाना बहुत जरूरी है. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू टीच, एंड दैट इज व्हाट आई विल try to also elaborate upon further, that if we want to create a world which resolves issues through peaceful ways, one of the things we need to do as educationists is learn how to teach young people to have a dialogue. चीजों को dialogue के through कैसे सुलझाते हैं, उसके ऊपर बात करना जरूरी है. मैं मानता हूँ कि हर जगह को, हर चीज में dialogue नहीं चल सकता, कई जगह पर कुछ और करना पड़ता है, लेकिन ये सीखे तो सही. बहुत सारे लोग ये सीखे ही नहीं है, एंड स्पेशली यंग पीपल ये सीखे नहीं है, तो उनको ये सीखना बहुत फायदेमंद चीज है. अब आप कहेंगे अब हो सकता है मैं डायलॉग करना चाहता हूं, लेकिन दूसरा व्यक्ति नहीं करना चाहता, मेरे टीचर नहीं करना चाहता मेरे साथ डायलॉग, तो मैं क्या करूं? सो वी हैव टू आल्सो थिंक अबाउट व्हेन डू पीपल अग्री टू हैव अ डायलॉग. लोग, when are people willing to have a conversation?
Not always, they don't always agree to have a conversation, but when do they agree to have a conversation? Why should we try to have a conversation? So one of the conditions, when do people have a dialogue, is when they are of equal power, they have no other option, then they say कि चलिए ये बात करते हैं. या हो सकता है कि जो दूसरे ऑप्शंस हैं, हो सकता है जैसे फॉर एग्जांपल मैं टीचर हूँ, मैंने इसको फेल किया है बच्चे को, अब वो मेरे पास आया बात करने के लिए. अगर मुझे लगता है कि मैं इससे बात नहीं करूंगा तो बवाल हो जाएगा, देन आई विल हैव अ डायलॉग. या मुझे लगे कि ये अगर मैं इससे बात नहीं करूंगा तो ये प्रिंसिपल को जाके शिकायत करेगा, देन आई विल हैव अ डायलॉग. सो ऑफन people are willing to have a dialogue when this is the best option. जो इसका दूसरा alternative is not a good alternative. Then people are willing to have a dialogue. So इसमें dialogue is easiest to have when people are of equal power. ये एक aspect है dialogue का. लेकिन क्या यही बात है? तो dialogue तभी हो सकता है जब दोनों लोग बराबर के हों, तभी dialogue हो सकता है. Not always. And let's look at another reason. When do people agree to have a dialogue? You can have a situation where people are of equal power, yet वो dialogue ही नहीं कर रहे, वो लड़े जा रहे हैं, they keeping on fighting with each other, और लहूलुहान हो गए हैं, फिर भी dialogue पर नहीं आ रहे. So just being of equal power is not enough to have a dialogue. You need something else, which is there must be a culture of dialogue. There must be a culture of dialogue. So लोग झगड़े जा रहे हैं, and they know कि ये बात कहीं नहीं जा रही, but फिर भी लड़े जा रहे हैं. That is because they don't have a culture of dialogue. Now, what is a culture of dialogue? A culture of dialogue is जहाँ मेरे पास बहुत सारे examples हैं, इस तरह से बात की जा सकती है, इस तरह से बात करके बात कहीं अच्छी जगह पहुंच सकती है. ये कल्चर की बात है. मेरे पास एग्जाम्पल्स हैं कि ऐसे किया जा सकता है, मुझे आदत है. आई एम यूज्ड टू हैविंग अ डायलॉग. I need to build a culture, and this is where education comes in. We are willing to have a dialogue when we have a culture of dialogue, and education can provide that culture. कि सिखाया जा सकता है, देखिए इस तरह से बातें की जा सकती है, चीजों को सुलझाया जा सकता है, और डायलॉग के थ्रू अच्छे रिजल्ट्स आ सकते हैं. ये भी कल्चर में हमको सिखाया जाता है थ्रू मेनी एग्जांपल्स. I'll come to that later. How can we create this culture? I'll come to that later. But I'm saying people are willing to have a dialogue when they realize के डायलॉग नहीं करेंगे तो कोई फायदा नहीं है, फायदा डायलॉग नहीं है. दूसरा, they may think when they may want to have a dialogue when there's a culture. अगर culture है dialogue का, even when I'm very powerful, I will still have a dialogue. For example, if I'm very powerful, for example, I'm a teacher, I know कि student को कोई नहीं सुनने वाला. मेरे college में, मेरी university में कोई नहीं सुनेगा student. I'm so powerful. But I have a culture of dialogue. I will still then have a dialogue. So culture is very important over here. Building that culture of dialogue is very important. A third reason to have a dialogue is, what do you do when you don't have a dialogue? कौन जीतता है? जब डायलॉग नहीं कर रहे, सिर्फ धक्का मुक्की कर रहे हैं, कौन जीतेगा? जो ज्यादा ताकतवर है वो जीतेगा. जो सही है जरूरी नहीं कि वो जीते, जो ज्यादा ताकतवर है वो जीतेगा. And if we want moral principles to decide, we want to decide things on the basis of what is right, not who is more powerful. That should not decide what should be done, but what is right. सही क्या है, जायज क्या है, वो होना चाहिए. इंसाफ किस चीज में है, वो होना चाहिए. That is another reason to promote a dialogue. When we don't promote a culture of dialogue, we are saying, okay, हम ये चाहते हैं कि जिसके पास ज्यादा बंदूकें हैं, जिसके पास ज्यादा ताकत है, वो जीतेगा. बट वो जरूरी नहीं कि वो सही है, बल्कि एक्चुअली जिसके पास ज्यादा ताकत है वो उसको सही होने में इंटरेस्ट नहीं रहता. If we want to have decisions based on सही क्या है और गलत क्या है, इसके सोच के को हम लेकर चलेंगे, that's a very important reason dialogue के कल्चर को प्रमोट करना क्यों किया जाए. So promoting a culture of dialogue, people will be willing to have a dialogue when they feel it is beneficial, either practically
or culturally they think this is beneficial to have a dialogue. Now, क्या इस पर लोगों ने काम किया है? बहुत लोगों ने काम किया है. You know, this is a very interesting thing. There's a lot of work around how do you resolve conflicts? What is the place of dialogue? How do you teach about dialogue? There is a lot of work in this. You know, I'm just giving an introductory talk. Manzoor is himself studying about this. He's taking a lot of interest. He's doing a lot of research on this. There's a lot of literature research on this, which one can share if you're interested. Just to mention a couple of things, so there's work which has happened in anthropology. People like Frederick Barth have done very good work. Political science में बहुत काम है. Social psychology में बहुत काम है on conflicts and how people deal with conflicts. Social psychology में बहुत काम है. There's an entire area called peace education. यूनाइटेड नेशंस पर्टिकुलरली इसको बहुत सपोर्ट करता है, और बहुत कंट्रीज, हमारे कंट्री में भी बहुत तरह की तकलीफें हैं. दुनिया में हम अनोखे नहीं हैं, दुनिया में बहुत कंट्रीज में बहुत प्रॉब्लम्स हैं, और लोगों ने ये सोचा कि प्रमोटिंग समथिंग कॉल्ड पीस एजुकेशन is perhaps an important way to deal with the unnecessary violence and bloodshed which happens around the world. Isme, some of the major scholars working in that area, peace education, are people like Betty Reardon, Johan Galtung. These are some of the important people. They made a lot of work in this. इंडिया में प्रोफेसर कृष्ण कुमार हैं, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी से अभी रिटायर हुए हैं. उन्होंने बहुत काम किया है, अच्छा काम किया है इसके ऊपर. लेकिन जरूरी नहीं कि सिर्फ एकेडमिक लोगों ने काम किया है, नॉन एकेडमिक जगहों पर भी इसमें बहुत काम है. अलग अलग तरह की सोच है, अलग अलग तरह की प्रैक्टिसेस हैं इसमें. जरूरी नहीं कि हर कोई इसको सपोर्ट करे, लेकिन आपको ऐसी आवाजें मिलेंगी, आपको इस्लाम में मिलेंगी, बुद्धिज्म में मिलेंगी. बुद्धिज्म में बहुत काम है इसके ऊपर, डायलॉग के ऊपर. अद्वैत फिलॉसफी में है, जैनिज्म में है, भक्ति मूवमेंट में है, सूफियों में है. बहुत तरह का काम है इसमें कि डायलॉग, आपसी प्रेम, आपसी प्यार मोहब्बत कैसे बढ़ाया जाए. इसके ऊपर बहुत लोगों ने काम किया है. हम अकेले नहीं है पागल जो इसके ऊपर बात कर रहे हैं, और भी बहुत पागल है जो इसके ऊपर काम कर रहे हैं. एक बहुत अच्छा काम है जो अगर आप गूगल करें, अभी अभी ये गुजरे हैं थिच नहात हान. ये वियतनामीज बुद्धिस्ट मॉन्क हैं जो एंटी वॉर मूवमेंट में बहुत काम किया है इन्होंने. इनकी बहुत खूबसूरत राइटिंग्स अभी अभी गुजरे हैं. ये बहुत तरह का काम है ना. बुल्ले शाह का आप सभी ने, मैं पंजाब से हूँ, सभी ने सुना है. बुल्ले शाह का की जो पोइम्स हैं लोगों की जुबान पर होती थी, एक समय था, और एक फिल्मी गाना भी है. See the importance of what Bulle Shah is saying, कि अब मुझे exactly original पंजाबी का नहीं याद, लेकिन he's saying something like मंदिर टादे मस्जिद टादे, मंदिर टादे मस्जिद टादे, लेकिन दिल ना टाना. You can break mandirs, you can break mosques, but don't break people's hearts, because that is where God lives. It's in people's hearts. It is in love. It is in the love which is in people's hearts. That is where God is living. So you have many voices talking about this in many ways. You have many movements which have worked in this way. We know that in the Indian freedom struggle, people around the world try to come to study the Indian freedom struggle. Because without using guns, of course, there were some groups which used guns, but without using guns, here was a movement which was able to throw out the most powerful empire in the world. How did they do this? लोग इसको स्टडी करने आते हैं. अमेरिकन सिविल राइट्स मूवमेंट ने भी ये किया है, मार्टिन लूथर किंग का काम है. दुनिया भर में एंटी वॉर मूवमेंट्स रही. व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि अगर हम सोचें कि डायलॉग, आपसी मोहब्बत को बढ़ाया जाए, इसके ऊपर बहुत लोगों ने काम किया है और उनसे बहुत कुछ सीखने की बातें हैं. मैं इस टॉक में कुछ एक उन बातों को आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा कि इन लोगों ने किस तरह की बातें की हैं. सो द फर्स्ट थिंग,
at the heart of uh, all talk about justice, actually, there is this question of human bonding. लोगों को आपस में कैसे जोड़ें? This is really important. Why is it important? अगर मैं लोगों के साथ अपना जुड़ाव ना महसूस करूं, अगर मुझे लोगों के साथ मोहब्बत ना है, थोड़ा पहले सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट दिस कांसेप्ट ऑफ लव एंड मोहब्बत, एंड इंसानी जो मोहब्बत होती है वो क्या है? What is love? Let's first of all think about that. See, love is basically a sense that between people, the boundary between people, when it begins to dissolve, when people feel that we are not two but we are one, that is what love is. That is what human bonding is. आपसी मोहब्बत यही है. ये ऑफ कोर्स यंग पीपल सोचते हैं सिर्फ उन्हीं के आपस में हो सकती है, लड़के और लड़की के बीच में हो सकती है, लेकिन एक्चुअली इसके बहुत रूप हैं, कई तरह से ये होता है. और बहुत सारे एंथ्रोपोलॉजिस्ट कहते हैं ह्यूमन सोसाइटी एग्जिस्ट्स ओनली बिकॉज लोग आपस में मोहब्बत कर सकते हैं. ये जरूरी नहीं कि सिर्फ आदमी और औरत के बीच में हो, ये ग्रुप्स, entire groups begin to care for each other. If you take the example of a father and a son, remember that idea that what is love? The sense that boundaries are dissolving, where I am ending and the other person begins, that boundary is no longer there, which means I will care for what happens to the other person. Let me give you an example that will make it clearer. So if there's a father and the father's son, बेटे को कुछ हो जाता है, बीमार है, कुछ हो जाता है, कोई एक्सीडेंट होता है, फादर को बहुत तकलीफ होती है. क्यों? क्योंकि ये प्यार है. प्यार में अपनी ही बाउंड्री को नहीं देखी जाती तक आदमी नहीं रुकता, दूसरे को क्या हो रहा है उससे भी उसे दर्द हो रहा है. दिस इज लव. इन लव boundaries dissolve and what happens to the other person is also important. Now this is necessary for justice. इंसाफ के लिए जरूरी है. क्यों? क्योंकि अगर मुझे फिक्र नहीं कि अगले व्यक्ति को क्या हो रहा है, दूसरे बंदे को क्या हो रहा है, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं कि उसके साथ इंसाफ हो रहा है कि नहीं हो रहा. अगर मैं लोगों से प्यार करूंगा तभी तो मैं इंसाफ के बारे में मुझे फिक्र होगी ना. इन अदर वर्ड्स, वन ऑफ द मोस्ट बेसिक थिंग्स इन एजुकेशन इज टू प्रमोट ह्यूमन बॉन्डिंग. अगर मैं लोगों के आपसी मोहब्बत को नहीं बढ़ा सकता या आपस में मोहब्बत नहीं है, इंसाफ नहीं हो सकता. इंसाफ तभी मुमकिन है जब लोगों की थोड़ी सी भी मोहब्बत है, तभी इंसाफ हो सकता है. ये नहीं कि लोग बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर डुले जा रहे हैं, वो भी जरूरी है, लेकिन थोड़ा सा तो जुड़ाव हो ना. अगर मैं ये सोचा वो तो जानवर है, मुझे इसके साथ कोई मोहब्बत नहीं है, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता उसके साथ अच्छा हो रहा है बुरा हो रहा है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तो अपना देखूंगा. Only when there is human bonding, then I care what happens to the other person. That's when I'm worried about justice. So how does one promote this human mohabbat, this human bonding? How does one promote it? There are many ways. I don't have time to talk about all of that. I'll just give you one of the examples, which is create positive images of other groups, other social groups, of other genders. ये बहुत बड़ी problem है हमारी. For example, let me just show you one or two photos. This is how people think about blacks in many parts of the world. वो तो violent होते हैं, criminal type के होते हैं, आपस में लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं. These are the images we see all around us. This image or an image like this, these are the common negative images we see. If in my community I only see negative images of people of other communities, how will I feel कि ये भी मुझ जैसे हैं? How will I feel that ये भी इंसान है? बहुत मुश्किल है. Which is why one of the basic principles of education, which says that we must teach human bonding, is create positive images. सिर्फ इस तरह के images नहीं रखें. Create positive images like this, for example. If I'm giving examples of blacks, I must give some positive images also. I must give images like this. जो भी इंग्लिश फिल्में देखते हैं, टीवी देखते हैं, इंग्लिश फिल्में आती हैं, विल स्मिथ को पहचानते हैं. अच्छा,
पॉजिटिव अच्छा कैरेक्टर्स का रोल प्ले करते हैं, प्लेइंग पॉजिटिव रोल्स. The point I'm making is one of the basic things people do in education is, and there's a lot of research on this, when I create positive images of other communities, that's when I begin to think positively about it. How do I do this? How do I create positive images? मैं ये करता हूँ by choosing stories, ऐसी कहानियां चूज करना जिसमें दूसरे communities के लोग हैं, जिसमें दूसरे genders के लोग हैं, और उनको उनके positive examples हों. अगर सिर्फ नेगेटिव एग्जाम्पल्स हो रहे हैं, मैं तो डरता रहूंगा, उनसे नफरत ही करूंगा. It is when there are positive images that I begin to feel good about it. So there are many things people have talked about. Don't deny identities. ये मत कहिए कि और कोई है ही नहीं, बस हम ही हैं. Recognize social groups. Acknowledge them. There's a lot of work around cooperative learning. Play games जिसमें अलग-अलग communities के बच्चे आपस में खेलें, अलग-अलग genders के बच्चे आपस में खेलें, not as competitors. Very important. Not to compete with each other, but to cooperate with each other. So there's a lot of work on cooperative learning and games that are promoting cooperation. There's a lot of research on this. One must theorize this. One must not just do activities or create such images. We must systematically analyze कि tensions के causes क्या हैं. For example, अगर मैं caste system के बारे में पढ़ाई कर रहा हूँ और caste को लेकर मेरे इलाके में बड़ी नफरत है, तो कास्ट सिस्टम को स्कूलों में पढ़ाना बहुत जरूरी है. इट्स अनफॉर्चुनेट, ज्यादातर स्कूल बोर्ड्स में कास्ट के बारे में बात ही नहीं करते, लेकिन बात करना जरूरी है. जब मैं उसको एनालाइज करूंगा, दैट्स व्हेन आई बिगिन टू रियलाइज कि ये प्रॉब्लम है, एंड आई बिगिन टू फील कि नहीं, ये इसमें कुछ गड़बड़ है, ये सही सोच नहीं है. या टू गिव अनदर एग्जांपल, व्हेन आई टॉक अबाउट रिलीजन को लेकर लोग बहुत झगड़ा करते हैं, आजकल दुनिया भर में कर रहे हैं. तो रिलीजन की अगर मैं स्कूल्स में या कॉलेजेस में सिस्टमैटिक स्टडी करूं कि एक्चुअली क्या क्या सोच है, दूसरा व्यक्ति, दूसरा जो बंदा है, दूसरे रिलीजन का व्यक्ति, जो मुझे लगता था वो तो शैतान है, वो तो बिल्कुल ही अजीब किस्म का है, वो शैतान नहीं रहता, वो भी इंसान लगना शुरू हो जाता है. जब मैं कहना शुरू करता हूँ रिलीजन्स में ये रिलीजन्स की हिस्ट्री है, अलग अलग पॉइंट्स ऑफ व्यू रहे हैं, ये डिबेट्स हैं, आई मे नॉट अग्री विद देम, बट वो इंसान लगना शुरू हो जाता है. So there are many ways of promoting human bonding over here. What about promoting dialogue? How do I promote dialogue? क्या मैं बच्चों को सिखा सकता हूँ how to have a dialogue? ये भी बहुत लोगों ने काम किया है, and I will give you just one example. How to listen to people. The first step in having a dialogue is कि मैं सुनना शुरू करूं. Not having a dialogue means मैं सिर्फ अपनी बात कह रहा हूं, मैं किसी की नहीं सुन रहा हूं. But if I want a dialogue, I learn to listen. हो सकता है मैं सही हूं, but if I listen, then I can ask the other person to also listen. If we have a culture of listening, then it is easier to move towards a dialogue. How do I create this? So let me give you one example of how people teach this in schools, people teach this in colleges, how to teach to listen. For example, one of the ways of doing this is to say, okay, we will have today's class, we will practice listening. We will practice listening. How do we do this? I divide the class. ये बहुत लोग करते हैं, मैंने भी किया है, ये बहुत दुनिया भर में लोगों ने इसको ट्राई किया, it works. इसका पॉजिटिव इफेक्ट है. तो मैं अभी जो मैं बताने वाला हूं आपको वो ये है कि क्लास में फिर चार पांच स्टूडेंट्स के ग्रुप्स बनाएं और उनको कहें कि बारी बारी में आपको ये करना है. पहला जो स्टूडेंट है वो बीच में आए, 4-5 के ग्रुप के बीच में आए और वो अपने किसी भी प्रॉब्लम के बारे में बताए कि मेरी ये प्रॉब्लम है. बाकी के लोग उसको टोकेंगे नहीं, उसका हल नहीं बताएंगे कि ये आपकी प्रॉब्लम है, ये इसका इलाज है, ये नहीं बताएंगे, सुनेंगे. 5 मिनट के 10 मिनट के लिए सुनेंगे और सुनते हुए 4 चीजों की प्रैक्टिस करेंगे. एक, लिसन टू व्हाट आर द फैक्ट्स व्हिच दिस पर्सन इज टॉकिंग. फैक्चुअली क्या बातें, बट डोंट जस्ट लिसन टू फैक्ट्स. द सेकंड थिंग इज लिसन टू इमोशंस. कई बार व्यक्ति
बोल कुछ रहा होता है लेकिन इमोशंस कुछ और है। फॉर एग्जाम्पल, मैं कई बार मैं हॉस्टल वार्डन से बात करता हूँ, मैं भी वार्डन रहा हूँ, वार्डन की लगातार प्रॉब्लम है, स्टूडेंट्स आके बोलते हैं खाना बहुत बेकार है ना, लगातार हर जगह मैंने यही सुना है कि स्टूडेंट्स आगे बोलते हैं खाना बहुत बेकार है। उनको जब मैं सुनता हूँ तो मैं रियलाइज करता हूँ वो फैक्चुअली खाना बेकार नहीं है, खाना अच्छा है, उसके पीछे एक इमोशन है। सो इमोशंस को सुनना बहुत जरूरी। इमोशन क्या है? हो सकता है कि उनको लगे कि मेरा घर की याद आ रही है मुझे, या हो सकता है उनको लग रहा है कि मैं बोर हो गया हूं इस खाने से। तो फैक्चुअली बात कुछ और है, इमोशन कुछ और है। सो लिसन इन दिस एक्टिविटी, स्टूडेंट्स को हम कह रहे हैं जो ये बोल रहा है कि अपनी प्रॉब्लम सुना रहा है, उसकी फैक्चुअली क्या बोल रहा है, उसके पीछे इमोशंस क्या हैं ये सुनिए, उसके पीछे वैल्यूज क्या हैं ये आइडेंटिफाई कीजिए, और चौथा ये देखिए कि उसकी बॉडी लैंग्वेज क्या है। इन 4 चीजों को ऑब्जर्व कीजिए। बोलना कुछ नहीं है आपको, वो व्यक्ति बोल रहा है। दिस इज प्रैक्टिसिंग टू लिसन। जब एक 10 मिनट की एक्सरसाइज हो गई है, वी से ओके, नाउ द सेकंड पर्सन विल डू इट। तो 1 घंटे भर की अगर क्लास है तो 4-5 का ग्रुप है, सभी 4 स्टूडेंट्स की इसमें प्रैक्टिस होती है। सुनने की आदत डालें, और सुनने में अगले व्यक्ति की प्रॉब्लम्स को समझने की आदत डालें। So there are many things which people teach in how to have a dialogue, और this is very effective, बहुत अच्छा इसका रिजल्ट आता है। कई चीजें हैं इसमें, मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा। अगर आप इसमें और डिटेल जानना चाहते हैं तो गूगल कीजिए हाउ टू टीच कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, हाउ टू टीच कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, आपको बहुत इसमें अच्छे अच्छे आइडियाज मिलेंगे। और ये स्कूल में भी यूज किए हैं लोगों ने, और कॉलेजेस में भी यूज करते हैं। इट मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस ऑन दिस। The last thing I can talk about today, last major thing. So how do we talk about, how do we teach children, how do we teach young people to think about justice, to feel for justice, कि justice होनी चाहिए, और समझने की कोशिश करें कि justice होती क्या है। As you see, justice के actually बहुत सारे अलग अलग मतलब होते हैं। जो एक व्यक्ति को लगता है इंसाफ है, जरूरी नहीं कि दूसरे को लगे वही इंसाफ। अलग अलग पॉइंट्स ऑफ व्यू हो सकते हैं। इसीलिए जस्टिस पर बात करने के लिए सबसे जस्टिस के लिए जरूरी है कि आपसी प्यार हो और डायलॉग करना सीखे। बिना आपसी प्यार मोहब्बत के, बिना डायलॉग के जस्टिस होना बहुत मुश्किल है। कि मैं कहूँ मैं लोगों से नफरत सिखाता रहूं, एक दूसरे से नफरत करो, लेकिन जस्टिस भी हो, वो नहीं होगा। जस्टिस के लिए प्यार मोहब्बत भी सिखाना जरूरी है, और डायलॉग करना, सुनना, एक दूसरे अपनी बात समझा पाना, बिना लड़ाई झगड़े, बिना एक दूसरे का सिर फोड़ने, बिना एक दूसरे का सिर फोड़े सुनना, वो भी जस्टिस के लिए जरूरी है। सो जस्टिस के लिए दूसरी चीजें भी जरूरी है, लेकिन जस्टिस के लिए और भी चीजों की जरूरत है। इसके लिए भी लोगों ने कई तरह की रिसर्च की है, कई तरह के एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, जस्टिस के बारे में कैसे सिखाया जाए। One of the things people have said, whatever are the problems of your times, फिर से यही कि उनकी कॉजेस को समझने की कोशिश, इसको एकेडमिकली सोचें। फॉर एग्जांपल, अगर किसी इलाके में जेंडर को लेकर बहुत वायलेंस है, जेंडर को लेकर बहुत टेंशन है, उसके कॉजेस क्या है, जेंडर होता क्या है, जेंडर का इतिहास क्या है, जेंडर के पावर डिफरेंसेस जो हैं वो क्यों बनते हैं, इसकी एक एकेडमिक एनालिसिस करके बहुत फायदा होता है। स्कूल्स में, कॉलेजेस में इसके बारे में पढ़ाना, what are the causes of our problems, that is the first very important thing to do. But that's not enough, और भी चीजों को करने की जरूरत है। We must create feelings again here also. See, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि लोग अपनी प्रॉब्लम को जो समझते हैं, दूसरों की प्रॉब्लम को नहीं समझते। So for justice, we also do in schools and colleges, we do what is called experiential learning. Experiences create कीजिए कि लोग महसूस भी करें कि दूसरे के साथ क्या हो रहा है, अपने साथ भी क्या हो रहा है उसको ज्यादा अच्छे से समझे, और दूसरों के साथ क्या हो रहा है उसको भी समझे। तो एक्सपीरियंशियल लर्निंग, फॉर एग्जांपल, छोटी सी चीज, एक मैंने टीचर को करते हुए देखा, बहुत खूबसूरत एग्जांपल है ये, कि लोग समझते नहीं है कि दूसरों, लोग ये जो जिसके पास बहुत सारे एडवांटेजेस हैं, बहुत सारे रिसोर्सेज हैं,
उसको ये नहीं समझ में आता कि दूसरे लोगों के साथ क्या प्रॉब्लम्स हो रही होंगी। फॉर एग्जाम्पल, तो इस टीचर ने बहुत अच्छी छोटी सी एक्टिविटी की थी। वो अपने स्कूल में गई, वो स्कूल में बच्चों को पढ़ा रही थी सोशल इनइक्वालिटी क्या होती है और प्रिविलेजेस क्या होते हैं, किसी के पास ज्यादा है, किसी के पास कम है। तो कंसेप्चुअली तो समझ में आ जाता है, लेकिन फील कैसे करता है कोई व्यक्ति कि इसके पास एडवांटेज है मेरे पास नहीं है, वो कैसे सिखाए। वो ये एक्टिविटी की उसने। वो एक्टिविटी ये थी कि वो कागज के टुकड़े ले गई क्लास में, सब बच्चों में कागज के टुकड़े बांट दिया। क्लास में सब बच्चे बैठे, कोई पहली रो में, कोई दूसरी रो में, तीसरी चौथी रो में बांट दिए। और फिर एक डब्बा दिया और बच्चों को कहा कागज के टुकड़ों का गोला बनाइए एंड थ्रो इट इन माय बॉक्स, मेरे बॉक्स में फेंकिए। फौरन बच्चों ने कहना शुरू कर दिया लेकिन ये तो फेयर नहीं है, जो अगली रो में बैठा है उसके लिए तो बहुत आसान है, जो पिछली रो में बैठा है वो कैसे, वो तो बहुत मुश्किल है उसको फेंकना। टीचर ने कहा देखिए यही तो इनइक्वालिटी होती है, यही सोशल इनइक्वालिटी है, यही तो प्रिविलेज होता है। दिस इज व्हाट आई वांट यू टू फील कि कैसे होता है कि कुछ लोगों के पास बड़े रिसोर्सेज हैं और कुछ के पास नहीं है, उसको महसूस करें। सो one of the other basic things people do when they are trying to teach children about justice is create experiences for them to feel it. There are many things which people do. Again, I'm just giving you examples, one or two examples. क्या होता है, discuss करें, memorize रटना नहीं है, don't just memorize things. Discuss in class what is good, what is bad. I can tell children this is good, that is bad. अगर ये नहीं लिखोगे तुमको एग्जाम में मैं तुम्हारा नंबर काट दूंगा, वो रट लेंगे लेकिन महसूस कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि वी आई नॉट डिस्कस्ड विद देम। भारत की, इंडिया की बहुत सारे देशों की प्रॉब्लम है, हम सोचते हैं कि एजुकेशन का मतलब है याद कर लेना, उससे बहुत असर नहीं होता। वी मस्ट discuss, we must analyze, talk, sit and talk. This of course requires that other thing, how do I have a dialogue? अगर मैं डिस्कस करते करते लड़ पड़ता हूँ तब तो डिस्कशन कहीं नहीं जाएगा, मुझे डायलॉग करना भी सीखना जरूरी है। बट डिस्कस करना और सोचना सही क्या है गलत क्या है, that is the way to move towards justice. So there are many things people talk about, and one last example I'll give is understanding power. Lot in many places justice is about is obstructed by power. कुछ लोगों के पास ज्यादा पावर है, कुछ के पास कम है, इंसाफ कैसे हो सकता है? तो पावर के बारे में बात करना, उसको समझना बहुत जरूरी है स्कूल में, कॉलेज में। अगर मैं चाहता हूं कि लोग इंसाफ के बारे में सोचें, बिना पावर के बात किए इंसाफ के बारे में सोचना बहुत मुश्किल है। I have to bring that also up in colleges and start discussing things. So let me connect up what I'm saying. What I'm saying is कि it is possible to teach. लोग कहते हैं आप कैसे सिखाएंगे पीस और जस्टिस के बारे में? बिल्कुल मुमकिन है सिखाना इसके बारे में। लोगों को आपसी प्यार सिखाना मुमकिन है। इस पर लोगों ने बहुत रिसर्च किया, दुनिया भर में बहुत अच्छा काम किया है, उनसे सीखना बहुत अच्छा है। ये तीन चीजें मैंने कहने की कोशिश की हैं। These are three major ways through which we try to cultivate peace and justice. We do activities, we do things, we do games which help children, help young people to recognize कि दूसरा ग्रुप जो है वो भी इंसान ही है, वो हैवान नहीं है, वो कोई जानवर नहीं है, वो भी इंसान ही है। जब ये हम सिखाना शुरू करते हैं उससे बहुत चीजों में फर्क पड़ता है, और इसके सिखाने के कई तरीके हैं। दूसरी मैंने बात करने की कोशिश की है कि आपस में बात कर पाना, ये सिखाना बहुत जरूरी है, टू हैव अ डायलॉग, so as to be able to listen, so as to be able to understand, be able to communicate my own ways of thinking, my own problems, मैं communicate करना सीखूं बिना डंडे उठाए, मैं अपनी बातों को कम्युनिकेट करना सीखूं, ये बहुत जरूरी है। और इसके कई तरीके हैं सिखाने के, मैंने एक दो एग्जांपल्स दिए। और सही और गलत के बारे में सोचना, क्लास में इसके ऊपर डिस्कस करना और उसे महसूस करना, सिर्फ याद नहीं करना,
उसको डिस्कस करना, एनालाइज करना और उसके ऊपर महसूस करना, ये भी, इसके ऊपर भी काम करना स्कूलों में, कॉलेजेस में बहुत जरूरी है। ये इसलिए जरूरी है कि ये नहीं कि ये, हाँ मैं ये भी कहूँ कि ये नहीं कि ये करके मैं अपनी आखिरी बात करूं कि ये नहीं कि ये कहेंगे दुनिया की सारी प्रॉब्लम्स हल हो जाएंगी, नहीं होगी। बहुत सारी प्रॉब्लम्स की जड़ें स्कूल में हल नहीं हो सकती, कॉलेज में हल नहीं हो सकती, उनकी जड़ें कहीं और हैं। वो अलग चीज़ों को हमको करने की ज़रूरत है। मगर जब हम इस तरह का एक कल्चर बनाते हैं तो इस कल्चर का असर हमको आज शायद उतना ना दिखे, लेकिन 10 साल 20 साल बाद दिखेगा, जब ये बच्चे बड़े होंगे और दुनिया में जाएंगे और वहां जब वो अपनी प्रॉब्लम्स को इस कल्चर से हल करना शुरू करेंगे, बहुत सारी चीज़ों का रुख बदल जाएगा। ये इन्वेस्टिंग टाइम एंड एफर्ट, इसमें इन्वेस्ट करना, डायलॉग पढ़ाने में, मोहब्बत, आपसी इंसानी मोहब्बत पढ़ाने में, जस्टिस के बारे में पढ़ाना, ये एक्चुअली हमारे फ्यूचर में इन्वेस्टमेंट है। सारा एजुकेशन हमारे फ्यूचर में इन्वेस्टमेंट है, लेकिन ये पर्टिकुलरली हमारे फ्यूचर में इन्वेस्टमेंट है। इसके फल हमें फ्यूचर में मिलेंगे जब हम देखेंगे कि बच्चे, यंग पीपल, आपसी बहुत सारे जो गिले शिकवे हैं जो होंगे ही, वो इन तरीकों से हल करना शुरू करेंगे, ना कि एक दूसरे को मार पीट करके, एक दूसरे के साथ गाली गलौज करके, एक दूसरे के साथ नफरत करके, उस तरह से हल ना करके इस तरह से हल ढूंढना शुरू करेंगे, तो शायद हम कहीं और जा पाएंगे। बस मैं यही कहना चाहता हूँ। So thank you so much, sir, for such a thought-provoking talk. I'm sure everyone among the participants must have loved it. I know we are living in a very polarized times, and maybe some people might be thinking that when there is so much conflict, when there is so much polarization, identity conflicts, no, who are these people who are talking about peace? But it's very important that we should talk about peace, and as you rightly said, that we need to promote dialogue and we need to promote human bonding in order to create a society where one will not become enemy of the other. And I believe you have rightly said, sir, that education will be playing a very important role in the times to come, and it has always played, and it should always play a very positive role as far as conflict resolutions or justice and peace is concerned. I'm so glad that, sir, you gave us time. So we will start the question answer session if there are. I would like to request participants that if you have any comment or question, you can please raise your hands, briefly introduce yourself, and directly ask the question to Professor Madan. If at all there is anyone, please raise your hand and you can ask. If at all there are, you can also put your comments in the comment box also. May I, sir? Yes, Shabir sir, Dr. please go Manzoor? ahead. Yes. Yes, thank sir, you. please go ahead. Thank you. Okay. Thank you very much for this wonderful talk. Sir, I have a question. So far, this establishment of the present day deep states are concerned, they believe in power politics and they cannot afford any compromise so far their national interest or security is concerned. And they justify even every act on the basis of national interest. And they even at sometimes, they say that if any damage happens, this is a collateral damage, and it happens in the terms of conflict, etc. Now my question is, can an education system of the country afford to challenge the core principles or the values of a deep state? Because we say that a quality education can change the mind, it can build, in a way, a sort of culture of negotiation and dialogue in the society. But can it afford to challenge the
values or the principles of its own deep state. That's my. Thank you, Shabir sir. Over to sir, please, sir. If you Yeah, can yeah. respond. No, that's a very important question. If there are, what you're saying is that if there are very powerful structures which are benefiting from violence, which are benefiting from confrontation, from hatred, what is the scope for talking about these things? You know, now I think there is still a lot of scope. Why I'm saying that is that nobody is homogeneous. Nobody is only filled with hatred. This is a basic principle. Even with the most, even with groups which are so full of hatred and so full of arrogance, even with them, it is possible to have conversations. To give you an example of people who have tried to do this and succeeded, there's a very famous example of Martin Luther King in America, black activist. He was in a situation where whites would literally spit on blacks, you know, and would abuse, would beat, do all kinds of things. Now, in such a situation, is it still possible to do? He said yes. Now, how does one do it? Firstly, when we talk of dialogue and when we talk of human bonding, actually this is something most people agree with. Even the most oppressive groups will in principle agree with this. You see, all negotiations start by trying to say, let us find the common ground. There will be a lot of things which we don't agree with. उस पर बाद में आएंगे. First, let's see what are the things we agree. And as we start to cultivate these things, that becomes the starting point of a lot of things. Now, I want to distinguish, long thing, but I want to distinguish between two things. Will governments around the world, will they agree to promoting dialogue and human compassion? I think yes, they will. See, what is their problem? Their problem is one going directly to them and saying, ये आपकी ये policy गलत है? वो तो बात की बात है ना. पहले let's build a culture of dialogue. वो तो बाद में होगा. The most governments around the world will be willing to build a culture of dialogue and negotiation and compassion, provided you don't directly, right now, don't challenge their power. That is a next step. That is a later dialogue which happens at a much later stage. What education does, and why this still makes a difference. Not I'm talking about education. I'm not, and I don't mean to say education is the only way to solve this. What education does is to build that culture जिसमें से वो लोग भी निकल के आ रहे हैं. See, right now problem क्या हो रहा है कि बहुत सारे लोग ऐसे स्कूल्स में से निकल के आ रहे हैं और वो हर तरफ है. ये नहीं कि यही लोग निकल के आ रहे हैं, वो नहीं निकल के आ रहे. वो बहुत, it's a very widespread problem where children haven't learned that dialogue is possible. Where children only learn the only way to deal with people that I disagree with is goli maar do. That is the only way to deal with people that I disagree with. Can I create in them a confidence कि नहीं और भी तरीके हो सकते हैं differences के ऊपर बात करने के लिए? When I'm through education, I'm creating that confidence, then things begin to change. वही लोग बड़े होकर power में आएंगे, maybe they will deal with things differently. So will governments allow this? See, they will allow it. What they will have a problem is a direct confrontation. They will have a problem. Around मैं इंडिया की नहीं बात कर रहा हूँ, मैं दुनिया में हर जगह की बात कर रहा हूँ और लोगों ने इस पे काम किया है. The next question, of course, is this enough to solve your problems? No, it is not enough to solve the problems, because solving the problems requires many other things. मैं कोई दूसरा एग्जांपल लूं, जैसे कास्ट की प्रॉब्लम को लेकर. कास्ट की प्रॉब्लम्स को अगर सॉल्व करना सिर्फ डायलॉग से हो जाएगा या आपसी मोहब्बत सिर्फ उसी से होगा? नहीं, वो शुरुआत है, वो बेस है जिसके ऊपर बाकी की चीजें बनती है. So
most people will agree to promoting dialogue and human bonding, which is the base. But to solve a problem like caste, I will have to do other things. I will have to build political movements. I will have to build mass media campaigns. I will have to build social movements के, for example, caste की basic, हर चीज का अलग अलग हल है. कास्ट का एक बेसिक हल है. कास्ट की प्रॉब्लम है कि हम सिर्फ अपने कम्युनिटी में शादी करेंगे, अपनी कम्युनिटी से बाहर शादी नहीं करेंगे. इस चीज को बदलने के लिए मुझे मूवमेंट्स बनानी पड़ेंगी. वो सब भी करना पड़ेगा. लेकिन प्लेटफॉर्म क्या है? प्लेटफॉर्म हैज टू बी कि हम, अगर मैं यही इस्टेब्लिश कर दूं बच्चों के दिलों में कि देखो सब इंसान हैं, मैं यही इस्टेब्लिश कर दूं कि देखो चीजों का हल बातचीत से निकल सकता है. That is the basis for everything else. क्या इससे सब कुछ, is this enough? No. Is it necessary? Yes, it is necessary. And will governments agree to it? अगर मैं ये उनको बोलूंगा देखो ये मैं कर रहा हूँ, इससे तुम्हारा तख्ता पलट दूंगा, वो बोलेंगे भैया रहने दो. अगर मैं बोलूंगा कि इससे हम बेसिक चीज बना रहे हैं जो सबके फायदे में है, सबके फायदे में है, तो बोलेंगे हाँ ठीक है. This is learning to have a dialogue. This is learning to negotiate. Right. So thank you for answering this, sir. We have a question from Shaukat Ahmad Malik. Shaukat Sahab, if you can directly ask the question, please. Ji, ji. If you can unmute your mic and ask the question. Yes, please go ahead. Hello. Mehraj Sahab, please go ahead. Thank you, Manzoor sir. I have two questions. Rather, I have few reservations. Yes. Briefly, First is, sir, if sir would have talked about what you called as a structural violence or institutional violence, how we can minimize this institutional violence or structural violence. Second is, sir talked about this avoiding the solution. It may sometimes help us to bring peace. Is avoiding the solution of the problem, because sometimes avoiding can escalate the problem unless and until we take action or involve ourselves to bring peace. I don't think peace can be achieved. Third one is, sir talked about moving away from this violent version of masculinity. Sometimes things can be otherwise too. Why we focus on the violence of males, or what you call as in patriarchal society? Things can sometimes go otherwise, and violence can be otherwise too. Maybe I may be wrong, but I need the intervention of sir with these points are concerned. Yes. Thank you, Mehraj Bhatt sir, for patiently listening to sir. Over to you, sir, please. Yeah, thank you. Three very interesting and very complicated questions. The first one on, tell me if I've understood it correctly, about structural violence and how does one deal with structural violence. Yes, there can be structural violence. Again, I'm taking the caste system as an example. There is structure. There is a social structure behind it. There are traditions that ये लोग आपस में ऐसे रहेंगे, उन लोगों से बात नहीं करेंगे. There are structures behind all of this. There are structures that this is deeply connected with political parties. This is deeply connected with cultural beliefs. There are all these structures, and it creates a violence. Yes, when one has to engage with this, one must understand its roots, and one must work on each of those roots one by one. Each of the roots have to be addressed and to be dealt with. What I'm trying to argue is that if I try to deal with those roots through confrontationist approaches only, it may not always go very far. And actually, it can often create very deep problems. But if I deal with those roots of that structural violence through dialogue, through creating bonding between people, then that is a much more likely pathway which will lead to better results. So, agar main yahi kahun, so that is my point. I'm not saying we should. I don't think I'm saying we should ignore the violence. I'm not saying that we should ignore the structural problems. They are there. How do I deal with them? I must deal with them through many things, but the basic principle of dealing with them is understanding humanity, building human relationship, and putting in efforts for that.
I've been giving examples of putting in efforts to schools. The problem, you see, where are the problems coming from? That people have learned कि वो तो इंसान है ही नहीं, उनकी क्या बात सुननी, वो तो इंसानों की बात सुनती, वो तो है ही नहीं इंसान. Where have they learned that? I have to change it where they are learning that. I have to struggle with that also. When I'm transforming that, many other things can begin to happen. So structural violence has to be addressed. The way of addressing that is by creating these kind of relationships. Then I can find other ways of acting on each of those pillars of that violence through these processes, you know, and then I have a greater chance that they will listen to me also. Okay. Is on the first point that I was saying. What was your second point, sir? The third I remember about masculinity. What was your second point? Second point was, sir, about avoiding the solution. Avoiding. Yeah. So I think I was saying that there are 5 ways of dealing with conflict. One is confrontation. Second is avoiding. Third is withdrawing. Fourth is something else, I forget now. The fifth is having a dialogue. I'm not saying that we should avoid problems. Sometimes it is good to avoid. For example, छोटी-छोटी चीजों को avoid कर लेना सही होगा. But I have to choose कौन सी चीज पे मैं काम करूंगा. But then I have to address it. I am trying to address it. I'm not avoiding it. But my point is, address करने का सिर्फ यही मतलब नहीं होता है कि मैं अगले ग्रुप के ऊपर अटैक कर लूं. एड्रेस करने का डायलॉग भी तरीका हो सकता है, और वो कैसे किया करते हैं डायलॉग, वो सीखना फायदेमंद है. मैं ये कह रहा हूँ, एड्रेस तो करना ही पड़ेगा उसको, लेकिन ये नहीं कि एड्रेस करने का एक ही तरीका कि मैं गुस्सा हो जाऊं या उनके ऊपर उनको कहूं कि आप तो बिल्कुल ही बर्बाद गलीज किस्म के लोग हैं, आपसे कौन बात करेगा, आपको सिर्फ डंडा समझ में आता है. ये एक तरीका एड्रेस करना है. कभी शायद एक यही तरीका हो सकता है. बहुत सारी जगहों पर लेकिन इसकी जरूरत नहीं होती, वहां पर भी हम यही इस्तेमाल कर रहे होते हैं. बहुत सारी जगहों पर डायलॉग मुमकिन है, और डायलॉग सीखना फायदेमंद है एजुकेशनली. और एजुकेशन सिस्टम में देयरफॉर एजुकेशन सिस्टम के थ्रू डायलॉग कैसे करते हैं वो सिखाना फायदेमंद है. हमारे बच्चे नहीं सीखते. फिल्मों में देखिए, फिल्मों में कौन सा उनको एग्जाम्पल दिखते हैं? यही होता कि हीरो ने एक मुक्का मारा, 10 विलन गिर गए, सब प्रॉब्लम्स हल हो गई. वो तो यही सीख रहे हैं. लेकिन कोई बात करके प्यार से कोई चीजों को समझाया जा सकता है. बहुत कम फिल्मों में आप ये एग्जाम्पल देखेंगे. ये सिखाना जरूरी है. तो मैं फिर से मैं ये नहीं कहता कि हर चीज का हल ये हो सकता है. कुछ चीजों का हो सकता है हल दूसरा ही ढूंढना पड़ेगा. लेकिन कभी ये ट्राई तो करें, और अच्छे से ट्राई करें, सीख के ट्राई करें ये कैसे किया जा सकता है. That was my second on your second question. The third on masculinity, ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि ये हमको नहीं सोचना चाहिए कि सिर्फ आदमी ही जुल्म करते हैं, औरतें जुल्म कर ही नहीं सकती. ऐसा नहीं है. तो इंसान है, इंसान औरतें भी इंसान है, आदमी भी इंसान है. हर कोई गलत काम कर सकता है. लेकिन कई लोगों ने इसकी एनालिसिस की है कि अग्रेशन, कि मैं चीज को बस मुक्का मार के डंडे के साथ ठीक कर दूं, ये हर जगह नहीं, लेकिन बहुत जगहों पर इसकी मर्दानगी के साथ एक कल्चर बनाया जाता है. मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये मर्दानगी असल में यही है, मैं ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन एक कल्चर बनाया. तुम मर्द हो तो तुम ऐसे बिहेव करो, सुन लो, तुम बात थोड़ी सुनोगे. मर्द जो होते हैं वो बात थोड़ी सुनते हैं, वो तो अपनी जो सही चीज है वही करते हैं. यही मर्दानगी है. ये जो कल्चर है मर्दानगी का, ये भी एक प्रॉब्लम का एक कंट्रीब्यूटर बन जाता है. कि अगर मैं किसी की बात सुनूं, यानी कि मेरी मूंछें नीचे हो जाएंगी, है ना. ये जो कल्चर है ना, ये प्रॉब्लम करता है. अगर मैं बात सुनकर या मैं नरमी से बात करूं तो लगा ये तो औरतों की जनानियों का तरीका है, मेरी मर्दानगी पर चोट आ जाएगी. ये प्रॉब्लम का. तो इस तरह का जो समझ है कि मैं मर्दानगी बनाए रखने के लिए मैं जब तक के लड़ाई झगड़ा ना करूं, कोई जरूरी नहीं है. आपके पास, हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल है
मर्दानगी के जिन्होंने हिम्मत रख के प्यार से लोगों को चीज़ों को समझाया है, ये भी एक मर्दानगी का एक मॉडल हो सकता है। तो बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि प्रॉब्लम ये हो जाती है कि जब बच्चे ये सीख रहे होते हैं, कि लड़के खासकर ये सीखते हैं और लड़कियां भी ये सीखती हैं कि अगर मैं बड़ा होके मर्द बनूंगा तो मैं हर किसी को डंडे के साथ सिखाऊं, सीधा रखूंगा, तभी मैं मर्दानगी दिखाऊंगा। इससे प्रॉब्लम्स बढ़ती हैं, घटती नहीं है। सो अनदर मॉडल ऑफ मैस्कुलिनिटी वी नीड टू थिंक। और हमारे पास बहुत सारे ऐसे मॉडल्स हैं जो कि नरमी से, प्यार से, सच्चाई की बात हिम्मत से बोलते हुए वो इंसाफ दिलाते हैं। ऐसे भी तरीका है। तो ये भी एक मर्दानगी का मॉडल हो सकता है। Thank you, sir. Sir, thank you, sir. So we have question from Qazi Shaheen. Qazi Shaheen, sir, if you can directly ask the question, please, if it's possible. अच्छा मंजूर साहब, मैं बहुत ज्यादा We have another question from Nazir Ahmad Khan. Nazir, is it okay if I've been using a lot of Hindustani? It's all right, na? Sir, it's all right. It's okay, sir. जी जी। Sir, just I want to, it's all right. by the time the Manzoor Sahab, our professor, he becomes ready for the question. You have, sir, mentioned a very important point, dialogue. Dialogue is the only way forward. And by using the dialogue, we can come to the conclusion about the conflict, about the issues, then we can resolve the issue. It is said that preventing war is the work of politicians and establishing peace is the work of educationists. Education can impart the skills and values needed to prevent the potential conflicts through dialogue, as sir elaborated on this issue. But I think we need to have our own self introspection on all these issues as well. Rumi, he was a mystic poet, Persian poet. He has once said that yesterday I was clever, so I wanted to change the world. Today I am wise, so I am changing myself. Wow. This quote is very important. We need to make individual contributions, understand the issues, problems, and then we can contribute towards the society and help the society to overcome all these issues. Thank you, sir. Thank you, sir. Sir, can we take the question? Yes, definitely. So we have a question from Nazir Ahmad Khan. He asks, as far as the theme and title is concerned, how can we expect peace and justice through education in the times when education is sold like commodity in the market, when education is profit-making business, and when quality education is a dream for millions of people? Sir, could you please throw some light on briefly, sir, so that we can take more questions? Very important point. These are very big problems, you know. डायलॉग के ऑपोजिशन में बहुत सारी ताकतें खड़ी हैं. आपसी प्यार के खिलाफ भी बहुत सारी ताकतें खड़ी हैं. ऑर्गेनाइजेशंस, पॉलिटिकल सिस्टम्स, पार्टीज, मार्केट्स, मार्केट लॉजिक, बहुत कुछ खड़ा है. तो क्या हुआ? अगर हमको लगता है ये सही, हम तो इसी पर काम करेंगे. The question is what do we think is really the path forward? If one is feeling, and one is researched on this, one is feeling fairly confident that the path forward has to be the path of dialogue and justice and peace, then one has to work on that, and one has to keep trying to persuade people कि look, this is the path forward. अगर हम मार्केट को ज्यादा फैलाएंगे, हर चीज को, एजुकेशन को, जैसे आपने कहा, हर चीज को कमोडिफाई करेंगे, कि लोग, अगर ये लोग ये कहेंगे कि वाइस वेस्ट टाइम रीडिंग स्टडिंग ऑल दिस, ऐसी चीज पढ़ो जिसके साथ नौकरी मिलती है, और वही पढ़ो और कुछ मत करो. आई हैव नो प्रॉब्लम, आई मस्ट बी क्लियर, आई हैव नो प्रॉब्लम ऐसी पढ़ाई के साथ जिससे नौकरी मिलती है, बहुत अच्छा है.
लेकिन सिर्फ वही करेंगे और कुछ भी नहीं करेंगे। जितनी आजकल सोशल मीडिया पर बेवकूफ़ी और नफरत की बातें इंजीनियर करते हैं, माफ कीजिएगा, वो हैरान होता हूं मैं। ये पढ़े लिखे लोग हैं, ऐसी बेवकूफ़ी की बातें कर रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने कुछ और पढ़ा ही नहीं है। वो इंजीनियरिंग करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन इंजीनियरिंग के साथ साथ दूसरी चीजें भी पढ़ना बहुत जरूरी है। Yes, this is a huge problem that this kind of commodification of education is preventing us from opening ourselves up to perhaps more important things. And dialogue, human love are more important things. It's preventing us from opening up to these things. It is a problem, and we have to work against that. There are many things which need to be done. One of them is this also, जो आप दूसरी बात भी कह रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात आप कह रहे हैं कि अच्छी एजुकेशन गरीब को तो मिलती ही नहीं है, अमीर को भी कहाँ मिलती है। वो तो कुछ एक जगहों पर कहीं कहीं आपको कुछ अच्छे टीचर्स मिलते हैं, कहीं कुछ एक जगहों पर अच्छे स्कूल थोड़े थोड़े से मिलते हैं, बट ज्यादातर इस देश में जो एजुकेशन तो बहुत बुरा हाल है। यस, वी हैव टू वर्क ऑन मेनी फ्रंट्स। इट्स नॉट जस्ट के ये काम छोटा है, ये मतलब छोटे स्केल का काम नहीं है, बड़े स्केल का काम है। कोई बात नहीं, इसमें ऐसी कौन सी हैरानी की बात है। अगर आप यही कहें कि वाई टॉक, कई बार लोग कहते हैं ये तो बहुत बड़ी चैलेंज है, कुछ नहीं हो सकता। आई गिव देम द एग्जांपल। देखिए, कोई आप मैथ्स पढ़ाना चाहते हैं, अच्छे से मैथ्स पढ़ाना चाहते हैं, वो भी तो इतना बड़ा ही काम है। इस देश में स्कूल्स नहीं ठीक से चलते, मैथ्स के नाम से लोग कुछ भी रटवाते रहते हैं। लर्न टू थिंक अबाउट मैथ्स, लर्न टू गेट द स्पिरिट ऑफ मैथमेटिक्स. That is also a big thing. This is also a big thing. This is what we should still try to do. You know, what we need to do. लेकिन how do we get hope कि इतना बड़ा काम है, कैसे आगे बढ़ें, इसके तरीके हमको सोचने पड़ेंगे। कि आपस में जो लोग अच्छी तालीम के बारे में इंटरेस्टेड और मोटिवेटेड हैं, वो कैसे आपस में नेटवर्क करें, कैसे आपस में कोऑर्डिनेट करके उसके ऊपर बात करें। एक मैसेज था कि हाउ टू परसुएड इंटेलेक्चुअल्स कि दिस इज इंपॉर्टेंट। वी हैव टू वर्क फॉर दैट. When more and more of the intelligentsia are getting convinced of this, more and more people will start to move towards this direction. So I believe we are done with the questions. If at all, if there is anyone, if anyone left, someone wants to briefly intervene the floor, we should also practice dialogue. So if there is a small intervention from any participant, we would like participants to speak. So the floor is allowed. So may I sir? Please introduce yourself, sir, please, and yes, ask the question. I'm Dr. Mohammed Said. I'm from Central University of Kashmir. At the very outset, I'd like to congratulate the college for organizing such a very wonderful event, and I believe that you have been kind enough that you have actually allowed us to be a part of this very important event. My congratulations to you also. You have moderated it, and you have invited one of the great academicians of the country for this talk. I have actually, my question have already been taken by one of the participants, but I have one more a small question that in my country, that how can we expect that education will bring peace and justice? Even the NEP 2020, which was framed, has polarized people on different fronts, especially our identities and on languages, etc. My another question is actually not related to this event. I have actually a question from this Central University of Kashmir to the Azim Premji University, that one day one of the delegations from Azim Premji University came to our university, and they have interacted with our students for actually getting admission in Azim Premji University. And one of the students actually asked a question to the delegation that what is the fee structure of Azim Premji University? And when the student heard the fee structure, which was very high, and in the lighter load, the student has said that then I have to actually sell one of my organs to seek admission in Azim Premji University. So my question would be that what are the steps that Azim Premji University have actually taken to minimize the fee structure and
and how to enroll the talented but economically weaker sections of the society. So thank you very much, sir. Thank you, sir. Yeah, Sir, thank over to you. you, sir. The second question is easier to answer. We have a very liberal scholarship policy. We have, I think, something like 60 to 70% of our students here are on different kinds of scholarships. So we have a very liberal scholarship policy. Please encourage your student to apply, and there's a very good chance that they will get scholarship. We have the scholarship is connected with the family income. So different family incomes will get different kinds. Somebody will get a full scholarship. Somebody gets a 80% scholarship. Somebody will get 60%. So that depending on family income. So, but we have the majority of our students here are on scholarship, and the university is committed that nobody will be left out of studying here for economic reasons. This is the university's. So please encourage them to apply. There is, if you see our university website, they also have details of scholarships. Okay. Majority of students are getting scholarships over here. That is one thing. The other thing, yes, the challenge. There are many, but the question is, do we have a choice? Participants can unmute themselves. Yeah. Do we have a choice not to work on dialogue and peace? We don't have a choice. Because if we don't work on this, we are heading into very deep trouble. The world is heading into a very deep trouble. The only way to save ourselves is to work on this, and to work on this in intelligent ways, by collaborating, by networking with each other, that together we have to create this kind of a culture. And again, remember this, the idea of dialogue is, I talk to everybody. We should talk to everybody. We are willing to be friends with everybody, because together we have to save the world. No one group can save the world. It has to be done together. And we have to work on this. The challenges are many, but we have to work on this. So I believe we are now at the end of this session. I'm so thankful to sir for taking time and elaborating us how peace and dialogue is important in restoring the peace in the societies. We are so glad that you took time to help peaceful societies. I'm sure we will take this forward, and we'll have some physical sessions also in the days to come. So I'm so glad the principal sir has given us this opportunity in engaging on this very important topic. And so before conclusion, I would like to invite Dr. Shabir Ahmed Parey, for Assistant Professor Political Science, Just a minute. College, Bandipora, for formal vote of thanks. Just a minute. Yes, It was really a wonderful philosophical lecture, and inshallah we will invite Professor Madan to our institution in the summers, and we'll have offline activity in the college campus. And I wish all participants my best wishes for onwards. Thank you, sir. Thank you so much, sir. It will be a great privilege to come. Sir, sorry for the interruption, Shabir Saab. I have an announcement to make. I request all the participants to turn on their video for a while so that I could take a screenshot for recorded reference. Thank you, Parvaz Saab. Shabir Saab, if you could kindly propose the formal vote of thanks. Okay, sir. Okay, thank you, sir. Thank you very much. With hottest greetings to all of you, I am proposing vote of thanks on behalf of the institution and the organizing secretary. First of all, may I extend my warm thanks to our worthy principal, Dr. Muhammad Amin Malik Saab, for his keen interest in organizing such a wonderful lecture for the larger benefit of the faculty and institution as a whole. We are highly thankful to you, sir, for your support, your guidance, and your encouragement. Secondly, let me put on record our warm thanks and gratitude to our esteemed guest speaker for today's session, Amman Madan, Professor of Social Anthropology, Azim Premji University, Bengaluru. Sir, we are highly thankful to you for accepting our call and delivering an exceptional talk on education for peace and justice.
Your thought-provoking analysis of the theme through eloquent way was very wonderful. I'm sure, like me, all the participants in this webinar might have benefited a lot. We're extremely thankful to you for making this session so engaging and fruitful. I am also thankful, rather, I must congratulate the organizing secretary of this event, Professor Manzoor Ahmad Parey, for organizing back-to-back lectures on these engaging themes. Sir, you deserve appreciation and applaud. I also extend my sincere thanks to all the participants, including faculty members of this institution and faculty members of the institution, various other institutions across the country, and other participants, especially for their head-to-head discussion at the end of the event. Let me put on record this, the support provided by our technical team, Dr. Nasrul Islam Saab, Parvaz Saab, and Bilal Saab. I sincerely thank you all. With this, we may conclude the event with this hope that in days to come, we will meet again with a new theme and new expert. Till then, goodbye. Have a nice time ahead. Thank you very much. Thank you. Thank you. Thank you, Shabir Saab. Thank you, Principal Saab and Madan sir. So we are actually ending this meeting. Thank you all for joining us. It was so